हाय गाइस, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं हूं अमरजीत नागी और आज जिस टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे वो है नार्सिसिज्म। नाउ इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स वर्ड, लेकिन अगर हम सिंपल ट्रांसलेट करें इसको कोलोकियल लैंग्वेज में या लोकल हिंदी लैंग्वेज में, तो इसका मतलब है आत्ममुग्धता। दैट मीन्स खुद पे ही मुग्ध रहना। लेकिन ये भी शायद पूरा इसका मतलब नहीं पता लगता इससे। इसका मेन जो मतलब है, जो कि नेगेटिव है एक्चुअली, वो ये है कि अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझना और दूसरों को थोड़ा अपने आप से इंफीरियर समझना। और ये किसी भी मामले में हो सकता है। कुछ लोग अपने आप में आत्ममुग्ध रहते हैं अपनी सुंदरता के ऊपर। सुंदरता अगर लेडी है या आदमी है, उसे लगे भी मेरा बॉडी बड़ी बढ़िया है, जिम में जाता हूँ, उस पे ही उसको काफी आत्ममुग्ध रहता है वो। कुछ आत्ममुग्ध रहते हैं अपनी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी पे। उनको लगता है भी मेरे से ज़्यादा इंटेलिजेंट या मेरे से ज़्यादा नॉलेजेबल कोई मेरे आसपास नहीं है, और मेरे को जो पता है वही एंड नॉलेज है। तीसरा आजकल एक और बड़ा आत्ममुग्धता का है, स्पिरिचुअल नार्सिसिज्म। उसमें जो हमारे प्रीचर्स हैं और धर्म ग्रंथों को हमें समझाते हैं, उनको भी ये लगता है कि जो धर्म ग्रंथों का इंटरप्रिटेशन है, इसका फाइनल जो ट्रूथ है वो मुझे ही पता है और वही सही ट्रूथ है। तो उनको दूसरी कोई क्रिटिसिज्म सुनना या कोई किसी और व्यू पॉइंट को बर्दाश्त करना बहुत बहुत मुश्किल लगता है, एंड दे रिएक्ट क्वाइट क्वाइट अग्रेसिवली इफ यू एक्सप्रेस एन ऑल्टरनेटिव व्यू। तो आज इसी मुद्दे पे बात करेंगे कि ये आत्ममुग्धता क्या है और कितनी खतरनाक है, किसको ऐसे देख, किस तरह से इसको परखा जाए, कैसे देखा जाए और कैसे कंट्रोल किया जाए। तो मेरे साथ आज जुड़े हैं अवनीश भारद्वाज जी, विजय ढाल जी। ये तो दोनों बार आए हैं पिछले प्रोग्रामों में, और इस बार हमारे साथ संजीव जी भी हैं, संजीव पांडे जी। तो संजीव जी, आपका भी स्वागत है, और अवनीश और विजय, आपका भी स्वागत है जी। तो शुरू करते हैं जी अवनीश जी से। अवनीश, नार्सिसिज्म ये क्या है, कैसे इसको परखा जाए, और ये कैसे देखा जाए कि खुद भी तो नार्सिसिज्म के शिकार नहीं है हम? क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जो नार्सिसिज्म है, तो ये तो शायद आपको पता ही होगा कि ये नार्सिस की एक ग्रीक स्टोरी है। जो एक नार्सिस था जो अपने आप को बहुत सबको बहुत इम्पोर्टेंट समझता था, और हाउ ही यूज्ड टू डिग्रेड एवरीवन अराउंड हिम। और बाद में से वो आत्म मुग्ध हो गया जब उसने अपने आप को देखा पानी में। हाँ, एंड फिर वो पानी में ही मैंने डूब सुन गया। लिया। हाँ, तो अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्टिव फिनोमिना भी है ये। हाँ जी, हाँ जी। पर जो नार्सिज्म में है, इसको आई डोंट नो, आत्ममुक्त तो वो बाद में हुआ था सबसे एंड स्टेज में, पर उससे पहले वो आत्म भव्यता या आत्म पूजा या कुछ और इस टाइप का था कि उस टाइम पे तो अपना मुग्ध नहीं था वो। बात उससे पहले वो वही है, इन्फ्लेटेड सेंस ऑफ सेल्फ इम्पोर्टेंस। हाँ, हाँ। चाहे वो किसी भी चीज की हो, चाहे अपने ज्ञान की हो, जैसे आपने कहा कि जो स्पिरिचुअल वाले हैं अपने आप को बहुत ज्ञानी समझते हैं। कुछ हम्म, लोग अपने आप को बहुत स्ट्रांग समझ सकते हैं, कुछ लोग अपने आप को आई एम फ्रॉम दिस कास्ट, और आई एम फ्रॉम दिस सिटी, yes, या आई एम फ्रॉम दिस प्लेस, और वट एवर हाँ, फैमिली और कम्युनिटी उस टाइप का है। ये मेरे ख्याल से प्रॉब्लम जो है, जो प्रॉस्परस सोसाइटीज की ज्यादा है। हम्म, जैसे जैसे समृद्धि बढ़ती है उसमें ये हो रही है। इसीलिए आजकल जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो दे आर रियली रियली वरीड कि ये फैलती जा रही है और बहुत ज्यादा होती है। इसीलिए इट इज ए मैटर ऑफ कंसर्न हम्म। टू वेस्टर्न वर्ल्ड क्वाइट अ लॉट। और अभी जो इंडिया की सोसाइटी है वो इंडिया भी में भी प्रोस्पर काफी होती जा प्रेवलेंट रही है। है, तो या, उसमें भी बहुत प्रॉब्लम होती है, सेल्फ इम्पोर्टेंस कैसे है। पर इसके साथ साथ एक आत्ममुग्धता और आत्मभव्यता तो ठीक है, बट देयर इज अ हिडन सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी यस। इन दिस काइंड ऑफ ए पर्सनालिटी। कुछ लोग इसको पर्सनालिटी डिसऑर्डर कहते हैं, पर कुछ लोग कहते हैं कि पर्सनालिटी है, इट इज अ टाइप ऑफ पर्सनालिटी जिसमें इन्फ्लेटेड सेंस ऑफ सेल्फ इम्पोर्टेंस करते हैं लोग। और दे कैन बी वेरी चार्मिंग, बट दे कैन बिकम वेरी नास्टी बिकॉज ऑफ हम्म, दैट सेल्फ सिक्योरिटी। Me in particular, actually, I've had an experience of working under a boss who later got diagnosed with this kind of a thing. रियली? ओके। But fortunately for me, he was so charming and it was so good. So, like, I'm in gratitude for that person. उससे इतना benefit हुआ, इतना हुआ, पर
तो दैट इज व्हाट एक्चुअली शोज कि वो दे कैन बी सो चार्मिंग अगर आप उनके यस। साथ हैं या उनको उनके लिए फिट हो रहे हैं, वट एवर दे आर आस्किंग। तो आई हैपन टू बी ऑन द गुड साइड, तो मेरे को तो इतना कुछ नहीं फर्क पड़ा, बट अदर पीपल वर hurting or something, and other areas, and it was after a few years later on, he got diagnosed with clinical diagnosis, what I mean. But also I happen to work with some neuroscientists जिन्होंने नार्सिज्म, इसीलिए मेरे को 3-4 साल पहले ही इस वर्ड के बारे में ज्यादा पता लगा। पर उससे पहले अगर हम भारतीय संस्कृति में देखा जाए तो दुर्योधन या रावण को भी इस कैटेगरी में डाल सकते हैं, उन उन दोनों की जो पर्सनालिटीज थी। सेल्फ सो इम्पोर्टेंस। नार्सिस तो ग्रीक मेथोडोलॉजी से है, पर अगर हम देखें कि दुर्योधन था और रावण थे जो वो अपनी बहुत सेल्फ इंपॉर्टेंस है, एंड व्हाट हैपेंड टू बिकॉज ऑफ देम, हाउ मच डैमेज। सो कमिंग टू योर पॉइंट, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, बिकॉज इट्स अ ग्रोइंग प्रॉब्लम, also it affects those people and it affects everyone around them. यस। तो हाउ वी बिकम अवेयर कि हम खुद तो नहीं अफेक्टेड हैं, और वी हैव टू बी केयरफुल कि हम किसी को लाइक नहीं करते, वी शुड नॉट थिंक कि वो नार्सिस्ट है हाँ हाँ बिना मतलब में हम उनको इस कैटेगरी हाँ में हाँ डाल दें। हाँ सो वी शुड बी अवेयर ऑफ दैट। यस यस। मेरे को इसके बारे में थोड़ा चैलेंजिंग ये लगता था कि महाभारत की एक स्टोरी में ये भी था कि जो दुर्योधन कृष्ण भगवान को कहता है कि मेरे को पता है कि क्या गलत है क्या सच है, पर मेरे से जो तुम जो सही कह रहे हो वो होता नहीं है। हाँ, अब तो ये कैसे हो गया कि जेनेटिक भाई भी तेरे है। से उसको पता भी लगता है और वो कहता होता नहीं है मुझे। हाँ तो हाँ। दिस ऑल्सो आई थिंक आई वांट टू हियर फ्रॉम यू गाइस, बट आई विल लेटर ऑन explain कि वो how the brain is a electrochemical organ and how it can happen that once this narcissist personality gets developed, तो शायद आउट ऑफ कंट्रोल उन लोगों के हो जाती है, एंड दिस काइंड ऑफ ए बिहेवियर कैन बी इन आवर ऑर्गेनाइजेशन, इन आवर फ्रेंड्स, इट कैन बी इन आवर फैमिली, पीपल अराउंड इट यू। कैन बी यस आवर सेल्स। यस So that is why एब्सोल्युटली। it is important and we should pay attention and awareness एग्जैक्टली। to this. या, थैंक यू साहब। विजय जी, नार्सिसिज्म के बारे में आपके क्या विचार हैं? सोसाइटी में कितनी बड़ी प्रॉब्लम है? इसको अगर खुद को ही ठीक करना है तो कैसे करें? दूसरों के आसपास कोई नार्सिसिज्म है तो लोगों की गैस लाइटिंग करते रहें हर हर बार जो लोग, उनको कैसे पहचाने? तो क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो ये कहना चाहूंगा कि हमारे ग्रंथों में जगह जगह इसका व्याख्या है। हम्म सुनते हैं हम लोग, बचपन में भी सुनते थे। तो मेरा ये विचार है कि कुछ तो पीपल आर बोर्न विद सम काइंड ऑफ अप्रोच इन द लाइफ। दे हम्म एक्सपीरियंसेस, उनका जो एनवायरनमेंट है या उनका जो फैमिली स्ट्रक्चर है, कुछ दे आर बोर्न विद इट, सेल्फ इम्पोजिंग, like you said, Amnish said, looking very good, looking very handsome, scoring high marks, and all those kind of. It just takes them to that level, and the person next to them who's not in that particular area is that good. They see them to be very weak or something, So that I've seen in many different ways, I mean, हम्म when in my last employment, when there was a team of 6 people, there were some people in that mode who were kind of behaving in one way, and there is always a team meetings and discussions, and then people in groups talk about it, two of them and one of them and all that, and it is destructive. हम्म um, but the key point, I think, narcissism, okay, like Avnish defined, it is someone thinking, he knows everything, and he behaves in a way, and other people feel awkward that. But if the other people do not see that narcissist behavior, they the point is how to deal with that. I mean, I remember a situation where I had a boss who had that kind of approach in some sense, and I kind of generally had a discussion, and I said that that behavior is a reflective of inferiority complex, हम्म inherent In inferiority complex, यस। insecurity है। इनसिक्योरिटी है किसी insecurity, चीज की। हाँ। inferiority complex, एंड देन ही और and शी ट्राइज टू इम्पोज हिमसेल्फ और then हर। then यस। then he or she, I could see the color changing, I mean, I didn't say directly, but the point is that I've seen our family members, our brothers, sisters, some are kind of simple people, they're born simple people, and they get
connections or relationship where there is a kind of, gap. I've seen in our family situations, I've seen at work situation. I only when I was growing up, I didn't know this. I learned because over and over again, I'll see people are different. Why is this? Sometimes, you say, I dislike him because he's behaving that way. But I kind of went over it. So the key point is, if you can recognize that, if you are able to recognize that, and you can relate that to हमारे जैसे ग्रंथों में एक ओंकार से तो बड़ा क्लियर व्याख्या है भी God is one, yeah. तेरा ही तेरा जो I mean उसके बाद तुम इसको पढ़ना शुरू करो तो it is so clean and clear, man. I mean if you understand what there's mostly ਹੁੰਦਾ की है कि लोग गए पाठ कीता समझे गपशप की लंगर खादा घर नु आ गए बट जो कहा गया है वो तो किसी सुना ही नहीं अगर सुन भी लिया तो उसको पहचाना नहीं ठीक है हाँ नहीं सही तो बात है हाँ जी बिल्कुल पहचानोगे जब तुम हाँ पहचानोगे तो you live a better life actually. यस You ट्रू love that. You see the green leaves, you enjoy that. तुम दाल रोटी खाओगे तो मजा आएगा यस तुम बाग बाग में घूमने जाओगे तो मजा आएगा हाँ नहीं ये ठीक है आई थिंक वी आर एक्सटेंडिंग दैट लिटिल बिट बियॉन्ड के हमारे फायदे क्या हैं इसके मैं एक कमेंट संजीव जी से ले लेता हूँ अब उसके बाद विल कंटिन्यू विद दिस ठीक है ठीक द है सेकंड ठीक राउंड ठीक है जी है संजीव जी पहले तो स्वागत है आपका यू वर द फर्स्ट टाइमर इन द लास्ट 2 राउंड्स यू वर देयर सो वेलकम नार्सिसिस्ट लोग आपके लाइफ में भी काफी आसपास होंगे जहां आप काम करते हैं सोशल लाइफ में और आपके ऑफिस में और दूसरी जगह पे जहां आप घूमते फिरते हैं या इस मीटिंग में भी हो सकता है हाँ इस मीटिंग में भी I'm just मैं तो खुद ही पहले बोल दिया था kidding. Keeping an open mind. कीप एन ओपन माइंड मैं सोशल लाइफ हमारी सोशल लाइफ ठीक है गुड पॉइंट टेकन जी संजीव जी आप क्या कहना चाहेंगे कैसे पहचाने और खुद के नार्सिसिज्म को कैसे पहचाने इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप First of all, thanks, guys. It's good to be with you guys. Look, to be honest, can you hear me okay? हाँ Yeah. can you Yeah. fine. So, to be honest, it depends on how you see that and how you define that. I haven't really come across many like that, but again, it comes down to the own perceptions about these things as well. I think often you see people, would be condescending, but are they really narcissists? Maybe not. I don't know. And there is a fine boundary between, being narcissist and being self-confident as well, Yes, because the yes. last thing you want to be is, and when you cross, and I think often I ask that question to myself as well, as part of self-reflection. Is this my self-confident, or I actually don't? Narcissist would be Nasty the word towards, for yes. me, but yeah, it's more like, am I being arrogant? So, and I think it's the, Vijay and Avnish both said that most of the time, whether I've seen those who are arrogant or condescending, they always carry a sense of insecurity. I think that's the common thread you can see. I think those guys have defined very well, what it is and some context around it. I think what's really useful is, and I think would be good to hear from everyone, that it's outside of our control. If somebody's narcissist, it's outside of our control. I had a quick 5-minute look at this thing, and I didn't know that apparently, it's kind of, it's a genetic thing as well. So there's not much you can do about it. But that's, we can't control others. Is important thing is how we actually recognize them, how we identify that somebody falls in that category. And 2 is, if that's the case, how we deal with that situation or deal with that person. Being very careful, obviously, and I've made that mistake in my life a couple of times as well, that you don't want to box people as well. Sometimes, these things are helpful, but if you box them, it can be counterproductive as well. खुद भी नार्सिसिस्टिक बिहेवियर शो कर रहे हैं अगर उनको बॉक्स Exactly. Yeah. So I think in terms of, I think your specific question, how we identify them, I think would be good to pick some views, because that is pretty much the bottom line, how we identify and how we deal with those situations. नहीं देखिए साहब जहां तक मेरी समझ है अगर इसका एक नार्सिसिज्म का सॉफ्टवेयर वर्जन जैसे संजीव जी ने भी कहा है सेल्फ कॉन्फिडेंस सेल्फ एश्योरेंस ये तरह के जो एस्पेक्ट्स हैं इसमें और नार्सिसिज्म में जहां मेरे हिसाब से थोड़ा सा फर्क है
सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब ये है कि अगर आप ये सोचें आई एम गुड, मैं बहुत अच्छा हूँ किसी कोई भी काम करने में, दिखने में, चाहे अपनी नॉलेज के बारे में, चाहे स्पिरिचुअलिटी के बारे में, लेकिन दूसरे लोग भी हैं जो कि इसमें अच्छे हैं। यहाँ तक तो ये सेल्फ कॉन्फिडेंस है कि मैं भी अच्छा हूँ और दूसरे भी अच्छे हैं। दूसरे भी अच्छे दूसरे भी अच्छे हैं, हो सकते हैं, ग्रेडिंग कर लीजिए आप अपने माइंड में जिसको करें, लेकिन दूसरे भी हैं। लेकिन जब आप में ये गॉड कॉम्प्लेक्स आ जाता है ना कि भाई मैं ही हूँ बस जो हूँ, तो तब वो नार्सिसिज्म जो है वो थोड़ा डिस्ट्रक्टिव हो जाता है। और वो डिस्ट्रक्टिव खुद के लिए भी है, जहां तक मैंने समझने की कोशिश करी है। खुद के लिए ऐसे होता है जब आप किसी अपनी एक क्वालिटी के ऊपर, चाहे वो नॉलेज है चाहे वो स्पिरिचुअलिटी, उस पर जब आप फोकस करने जाते हैं ना, उसके बारे में आप यू टू प्राउड ऑफ इट, आपके दूसरे एस्पेक्ट्स जो है लाइफ के वो निगलेक्ट हो जाते हैं। अगर आपको लगे कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ, अपने यूनिवर्सिटी एज में देखिए, तो फिर पढ़ाई लिखाई पीछे रह जाती है, क्योंकि आप उसी में घुसे रहते हो कि शीशे के सामने खड़े होकर बाल कैसे बनाने हैं, है ना। तो वो एक अपने आप को वो है। इसी तरह स्पिरिचुअलिटी के बारे में अगर आपको लगे कि भाई मेरी नॉलेज सबसे बढ़िया और मुझे पता लग गया सब कुछ, एंड व्हाट आई नो इज द ट्रूथ एंड द लास्ट वर्ड इन इट, और यही सही है, तो फिर आप और कुछ सीखना ही सीखते ही नहीं, बंद कर देते हो, लर्निंग स्टॉप्स देयर। तो ये खुद के लिए भी टॉक्सिक है। और जो आपके आसपास के लोग हैं जिनको आप ये बताने की कोशिश करते हो भी आप तुम मतलब हम तो हैं, मतलब तुम क्या हो, अगर ये कहने की कोशिश करोगे तो उनके लिए भी बेचारों के लिए टॉक्सिक है, जिनको आप गैस लाइटिंग करते हो। तो मेरे हिसाब से जो फाइन जो लाइन है मेरे हिसाब से जो बनती है वो ये है कि मैं भी ठीक हूँ, आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट इन माई सेल्फ, लेकिन वो जो दूसरे लोग, विनम्रता हाँ विनम्रता होनी दूसरे लोग हैं चाहिए। वो भी अच्छे हो सकते हैं, वो भी अच्छे हैं, नो प्रॉब्लम। तो अब मैं लास्ट राउंड ले लूंगा। I अवनीश जी think पहले before आप, that, हाँ जी सर। if I can just endorse something you said, and I think that got me thinking. हम्म, I think you spot on. I think the big difference is, and I mean theoretically you will see a narcissist won't be a good listener, and I think what you talk, and a person who's self-confident, he or she would listen to others as well. And I think that's where यस, the key difference. I think you articulated pretty well. I think that's where the key difference is. या नो दैट्स गुड। अवनीश जी आपका सेकंड राउंड और लास्ट कमेंट प्लीज। हाँ, तो इसमें जैसे यू नो व्हाट वी सेड, वी हैव टू बी केयरफुल कि हम किसी को लाइक नहीं करते, हम उनको नार्सिसिस्ट कर दें, उनको लेबल करना शुरू कर दें और अपना नहीं देखें। तो अवेयरनेस, इवन साइकोलॉजिस्ट से दैट द नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी कम्स बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस। और इसका शायद थेरेपी भी यही है कि अगर हम अपनी या इस बिहेवियर को करें और अपने आप को बचाने का, एक्चुअली जो हम इन संत महात्माओं से भी पूछते हैं इस बिहेवियर के, वो कहते हैं इनसे दूर हो जाओ। और दूर हो जाओ पॉसिबल नहीं होता, यू कांट लीव अ जॉब इमीडिएटली, और इफ एग्जैक्टली। दे आर इन योर फ्रेंड सर्कल यू Yeah, कैनॉट how बी। can you just And these people, these kind of personalities have, they can turn it on and off, they can charm people, they can be yes, nasty with others depending upon अगर ये लोग क्योंकि उनमें इनसिक्योरिटी है, इफ दे आर फीलिंग सिक्योर तो वो नास्टी हो जाते हैं। हाँ then they will, you know, throw the toxicity. और अगर वो नहीं है तो, but they are very hard working, there are a lot of successful people, they can be very yes, good managers, they are absolutely, very rich people, they would be organizing parties for you, they will be yeah, charming you with this and absolutely, that and whatever. And when they are nasty, then they can be very extremely yeah, toxic as well. जो So basically I think setting up the boundaries, how you yes, can save yourself, and the social structure or overall solution is what Vijay was alluding to, कि अपने अंदर थोड़ी सी शांति लाएं और अपने हाँ अंदर थोड़ी सी कृतज्ञता भाएं, यू नो, बिल्कुल, ग्रेटिट्यूड एंड यू नो thankfulness, ब्रिंगिंग yes, दैट विनम्र भाव जो है, विनम्रता, वही उसका मेरे ख्याल से ओवरऑल सोल्यूशन है। पर जो पीपल हु आर लिविंग इन दैट पैटर्न, एक आध बार में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक आध बार में एनीवन कैन बी, यू नो, नार्सिसिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स। हो बट व्हेन सकता इट बिकम्स ए बिहेवियरल है, पैटर्न एंड आउट ऑफ कंट्रोल, जैसे दुर्योधन का था, कहता मेरे को पता लग जाता पर फिर मेरे से नहीं होता। वो उनको बाइपोलर उनको टाइप जो बिहेवियर है। राइट राइट। तो हाँ, वो जो हो रहा है, आई थिंक दैट इज द प्रॉब्लम, बट इन द yes, एंड आई थिंक द सोल्यूशन विल बी वही है जो वाहिगुरु और हुक्म मानो, और हाँ हाँ जो ईश्वर का जो है उस भाव में रहो, प्रसाद बुद्धि जिसको कहें, अगर वो हाँ, डेवलप करें तो तभी उसका होगा। माइंड शांत रहेगा। और ये विजय जी आप कहना चाहेंगे और फाइनल कमेंट? I just want to say, even when you talk about somebody who's self-confident, I mean, I've seen in discussions, and possibly you guys have also seen, the person who's really self-confident, he doesn't have to force himself on others, actually.
He just puts his point across. Yes, sir. Others with That's a it. low IQ, high IQ, middle IQ, narcissist behavior, they Hmm. all heart to heart know Yes. that this guy knows. He doesn't have to force anywhere. Yes, true. There's a True. distinct clarity, in a discussion. If you have someone who's got knowledge Hmm. and there's another party who's got knowledge, and the one with the narcissist behavior will come across very different to the one who's got not that behavior. Yes. And when you see those people, and it is the person who doesn't reflect anything narcissism is growing every day. He's growing in that meeting, he's growing after the meeting, he's growing next day, whereas the narcissist behavior will not let him grow because he Yes. just stagnates. Yes. So the key point to understand is to manage your own instincts and your thinking, and it doesn't mean that you become docile and anybody can ride over you, and that is not the point of this Yes. discussion. Yeah. The That's point right. of this discussion. But Vijay, let me, I'm sorry to interrupt. जो मैं अपना experience बता रहा था, the person who turned out to be narcissistic, diagnosed by a psychiatrist, was, I mean, it was a shock to me, because to me That's it otherwise was very such a nice. good environment and fantastic, and I was benefiting so much, I was learning so much, I Yeah. grew so much under that person. Yes. कि मेरे को अगर कोई सपने में भी पूछता तो I would have not said that. Yeah. Yeah. That's true. संजीव, आप म्यूट पे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे एज ए फाइनल कमेंट? फिर हम wrap करेंगे. I've got a few questions, Amma. I'm quite curious, and again, looking at the practical side of things. Avnish said, you had a manager who was, diagnosed as, properly narcissist. I'm just curious because I've never had that experience, where somebody's been diagnosed or being attacked that way. I'm just curious to hear, how your experience is, if you could just unpack that a little bit more. And particularly in terms of, what you were seeing in behavior and what was coming across as narcissist. But if I hear you correctly, a lot of his behavior wasn't coming across that way. So if you're on the other side, because I think the issue is not whether, you are narcissist or not. I think it's more about those which are around us that way, how we manage, how we deal with that. So really keen to hear from you on that. So my experience Final and now comment, sorry, in, final comment, Avnish. Time-wise, we are running out, so just final comment and then we'll... So, yeah, so just quickly answering Sanjeev's, sharing my experience, and experience from the hindsight, learning was the behavior was very conflicting at times, although I was not in the firing line, so it was conflicting for some other people. And as I mentioned, एक आध बार conflict होगा तो ठीक चलता है, but when it becomes a pattern, then it was a problem. Other thing was very negative or hypersensitive to some kind of what was perceived as a negative feedback. So people were not able to provide proper feedback, etc. And overall, environmentally, as I mentioned, was able to turn on and off, was very charming at times and then nasty at other points, and so very unpredictable kind of a situation. Bipolar behavior होता है. हाँ, You never know bipolar which type है. No. You could actually, because if you are in what they want you to do, then it's fine. But if you are not, what they are trying to buy from you, what they are trying to source from you, and you are not supplying that, then they will be nasty. But if you are supplying what they want from you, then they are very charming. So it's not bipolar. It's just people should agree with them. Either you're with me or you're against me type. Yeah, exactly. So they go shopping. I want this. I want. So if you are providing that, good. If you're not providing that, then they will be so nasty to you. Yeah, that's okay. All right, Saab. I think it has been a good discussion, and we all learned something from each other. And I hope people, those who see that, they will also at least learn, or if not learn, then at least get clear in their head what they don't know, what they want to know, kind of thing, and it'll help them. So, Saab, इस discussion को यहीं wrap up करते हैं. Thank you very much, and see you next time around. Bye for now. Okay. Bye-bye. All right.